स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागर रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागर ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गुरुनिचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो पिलांतराधाकांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, let me share the screen. Okay, so we are starting fourth chapter. We are continuing fourth chapter from yesterday. By austerity, celibacy, and control of mind and senses, one can advance in pure life. Similarly, advancement can be made through charity properly directed. That is called tyag, renunciation. If one has $1 million, he should not keep it, but as long as it is within his jurisdiction, he should spend it for Krishna. Money or energy is properly utilized when it is directed to Krishna. As soon as one quits his body, all his monetary resources and everything else that he has collected in connection with his body is finished. For the spirit soul transmigrates to another body, and one does not know where the money which he earned in his previous body is being kept or how it is being spent. A person may leave the world declaring how the money should be spent by his son or heirs, but even if one leaves millions of dollars, in his next life he has no claim to it. Therefore, as long as it is in one's hand, it is better to spend it for a good purpose. If one spends it for bad purposes, he becomes entangled. But if he spends it for good purpose, he gets good in return. This is very clearly stated in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita explains that there were three kinds of charity. Charity in the mode of goodness, passion, and ignorance. A person in the mode of goodness knows where the charity should be given. In Bhagavad Gita, Krishna says, Samoham samo bhuteshu name divyasos iti na praya ye bhajanti tu mam bhaktya maite teshu chapyam mai te pasyu te tapesu chapya aham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Bhagavad Gita 9.29. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Krishna is not in want of money, for he is the original proprietor of everything. Isvastyam idam sarvam. But still he asks us for charity. For example, Krishna in the guise of Vamana, a dove Brahmana, went to beg from Bali Maharaj. Even though he is Sarvloka Maheshwaram, the proprietor of all planets, he nonetheless says, "Please give in charity to me." Why? It is for our interest. For the sooner we return Krishna's money to Krishna, the better situated we will be. Of course, this may not be very pleasant to hear, but actually we are all thieves, for we have stolen God's property. If one who has something is not God conscious, it is to be understood that he has stolen God's property. That is the nature of material life. If this is considered thoughtfully, and if one comes to real knowledge, he will realize that we do not understand God
whose property we are using. Whatever we possess is stolen property. It is also stated in Bhagavad Gita that if one does not spend his money for yajna, नो sacrifice, यज्ञ 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 होता है ना यज्ञ उसके लिए okay, यज्ञ sacrifice, he is understood to be a thief. You bhukante ste na eva saha. For instance, if one earns a great deal of money but tries to hide it to avoid paying income tax, the government considers him to be a criminal. He cannot say, I have earned this money, why shall I pay tax to the government? No, he must pay or risk punishment. Similarly, in the higher sense, everything we have is Krishna's or God's, and it must be utilized in accordance with his desires. We may wish to construct a building, but do we get the stone, wood, and earth that the construction requires? We cannot artificially produce the wood. It is God's property. We cannot produce the metal. We must take it from the mine, which is also God's property. अर्थ So, the earth and the bricks which are made from it, are also God's. We simply give our labor, but that labor is also God's property. We work with our hands, but they are not our hands, but God's. For when the power to use the hand is withdrawn by God, the hand becomes useless. Hare Krishna. हरे कृष्ण कोई और ज्वाइन किया गया अभी हमें we should use this great opportunity human life to understand all these points which are mentioned in the authoritative books of Vedic knowledge like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. In the Bhagavatam, Sukadeva Goswami declares that real atonement necessitates thoughtfulness, sobriety, and meditation. One must consider whether he is the body or whether he is transcendental to the body, and one must try to know what God is. These ideas are to be studied in Krishna consciousness. We should not be frivolous or waste time. If one wants this knowledge, he has to practice austerity, tapasya, and the beginning of tapasya, as already explained, is brahmacharya, celibacy or restricted sex life. The pilot of material attraction is sex, not only for human society, but for animal society also. Sparrows and pigeons have sex 300 times daily, although they are strict vegetarians. And the lion, which is not a vegetarian, has sex once a year. Spiritual life is not a question of vegetarianism, but of understanding higher knowledge. When one comes to the platform of elevated knowledge, he naturally becomes a vegetarian. Pandita Samadarshina, one who is very highly learned, does not distinguish between a learned scholar, a brahmana, an elephant, a dog, and a cow. He is Samadarshi. His vision enables him to see them all equally. How is this? He does not see the body, but the soul, the spiritual spark, Brahman. He thinks here is a dog, but it is also a living entity. Although by his past karma, he has become a dog. And this learned scholar is also a living spark, but he has taken good birth because of his past karma. When one comes to that position, he does not see the body, but the spiritual spark, and he does not distinguish between one living entity and another. Yes, Guruji. Actually, we do not make distinctions between carnivores and vegetarians. For the grass has life just as the cow or the lamb. कार्निवोर्स समझिए ना आप कार्निवोर्स बिटवीन कार्निवोर्स एंड कार्निवोर्स मतलब वो जो मांसभक्षी होते हैं. Yes, Guruji. A guideline, however, should be the Vedic instruction given in each Upanishad. Ishavasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena teak tena bhunajitha bhunajatha ma gradaha kasya swid dhanam. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one must not accept other things, knowing well to whom they belong. Isha Upanishad mantra first. Since everything is the property of the Supreme Lord, one can only enjoy what is allotted to him by God, by the Lord, and one cannot touch another's property.
According to the Vedic life and according to all Vedic scriptures, a man should live on fruits and vegetables for his teeth, and in and for his teeth are made in such a way that these can be easily eaten and digested. Although it is the nature's law that one has to live by eating other living entities. Jivo jivasya jivom. मतलब ये एक But इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम वेजिटेरियन है, आप समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस आर्ग्यूमेंट के लिए। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग प्लांट्स वगैरह भी तो खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं तो उसमें भी जान होती है। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा उस प्रीचिंग पर्सपेक्टिव से कि जीवो जीवस्य जीवनम, जीव का जीव ही जीवन है, मतलब एक लिविंग एंटिटी दूसरे पे डिपेंड करता है, ये नियम है। तो उस सेंस में देखा जाए तो सभी मांसाहारी हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसमें और कोई आर्ग्यूमेंट देने पे हम डिफीट हो जाएंगे। हमें तो वैदिक प्रिंसिपल बताना पड़ेगा कि जीवो जीवस्य जीवनम। अब प्रभुपाद आगे बताएंगे कि एक जीव दूसरे पर डिपेंड तो कर रहा है, पर उसके लिए भी कुछ नियम है, तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या नियम बताएंगे। Okay. one must use discretion. Fruits, flowers, vegetables, rice, grain, and milk are made for human beings. Milk, for example, is an animal product. The blood of animal transfers, but the cow delivers more milk than is needed by her calf because milk is intended for men. Men should simply take the milk and let the cow live, and thus following nature's law, man will be happy. Tena, tena, taya katana, nahi, taya, what should I say this? Hold on. Taya ketan, bhujinata. तेन त्यक्तेन, त्यक्ते है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता, भुंजिता मतलब जो भोग करता है। ये साइलेंट रहेगा आई गेस। तेना तेन त्यक्तेन, तेन त्यक्तेन तेना भुंजिता। One should take whatever God allots to him and thus live comfortably. We have to elevate our consciousness through this science of Krishna. Charity is within everyone's heart, but we do not know how to make the best use of it. Whatever we spend in terms of energy should be used for Krishna, for it all belongs to him. By spending for Krishna, one will not be a loser. Krishna is so kind that when we offer him food, he accepts and yet leaves everything for us to eat. Simply by offering food to Krishna, we can become devotees. We do not spend an extra farthing. In the higher sense, everything belongs to Krishna, but if we offer everything to Krishna, we will be elevated. This is a sublime and proven way for advancement in pure life. Hare Krishna. So I think this is our last chapter of this book, fifth one. Learning steadiness and Krishna consciousness. When one reaches the topmost position of material opulence, the tendency for renunciation is natural. There are two tendencies in this material world: bhog, sense enjoyment, and tyag, renunciation of this material world. Without guidance, however, one does not know how to renounce. First of all, one wants to enjoy, and when he is frustrated in enjoyment, he renounces. Again, when he is tired of renunciation, he enjoys like a clock pendulum which swings from side to side. We are thus all vacillating from the platform of enjoyment to the platform of renunciation and back again. Karmis, routine workers, try to enjoy this world and reap the fruits of it. Consequently, they are constantly traveling on expressways all day and night to engage in mental enjoyment. On the other hand, there are others, predominantly the discontented youth, who don't want any part of this. Thus, the world contains those engaged in bhoga and those engaged in tyag. However, we will not be happy by following either of these paths because it is not our proper position to either enjoy or renounce. Since everything belongs to Krishna and nothing belongs to anyone else, whatever we possess is actually Krishna's property. Ishavasyam idam sarvam. Since we have not produced the trees, plants, waters, or the land, we cannot claim them. Since we actually have nothing, we can renounce nothing, or as it is said, naked we come into this world and naked we go out.
In the interim, we falsely claim this is my country, my home, my wife, these are my children, my property, this is my bank balance, etc. Such claims are false because when we come into the world, we come in empty-handed, and when we go out empty-handed. What then is the meaning of bhoga and tyag? In the light of the actual facts, they have no actual meaning. Bhoga is thievery, and tyag, renunciation of what never belonged to us, is a form of lunacy. मतलब त्याग दिया, और त्यागना क्या है? तो आपका कुछ था ही नहीं, दोनों ही फेक हो गया ना. Yes, Ishu. In this regard, Krishna gives us the direction. Sarva dharma parityajya mam ekam sarvam vraja. Bhagavad Gita 18.66. Although we have created different types of religion based on bhoga and tyaga, we are thus advised to give up all of them and to surrender unto Krishna. It is not within our power to enjoy or to renounce. When renunciation is recommended in Bhagavad Gita, it refers to renunciation of everything that we falsely claim to possess. A child may take $100 bill from his father and try to keep it, although he may not know how to use it. The father may beg the child, "Dear boy, kindly give it to me." The child does not know that the money actually belongs to the father. Nor does he know that he had the best hand it to his father, best to hand it to his father. For he simply does not know how to use it. Similarly, Krishna says, renounce your work for me. Renounce your health and property for me. Krishna is not a beggar, for everything belongs to him, but he does treat us like small children. Compliance to his request to give everything to him is called tyaga, renunciation, and is one of the means by which we can attain elevation to Krishna consciousness. Austerity, celibacy, equanimity, and charity are all required for realization of ultimate or absolute truth. Krishna consciousness is not concerned with the relative truth, but with the absolute. In Srimad Bhagavatam, Vyasadeva offers his obeisance to the supreme absolute truth, Satyam Param Dhimai. He offers his respect not to the relative categorical truths, but to the Sumamam Bhunam, the absolute truth. It is the duty of Brahmanas to practice those qualities by which the absolute truth can be realized. Yes, Madhu. Brahmanas must be qualified by practicing cleanliness, truthfulness, control of the mind and the senses, simplicity, and by cultivating faith in the Vedas and particularly in Bhagavad Gita. When Krishna says, "I am the Supreme Lord," we have to accept him with faith, not foolishly, but with full knowledge, and practically apply this acceptance in our daily life. A Brahmana is not created by birth, but by education, practice, and knowledge. It is not a question of birth, but quality, as pointed out by Krishna in Bhagavad Gita. Chatur Varnyam Maya Stratam Gunakarm Vibhagasa Tasya Kartaram Apimam Vidya Akartaram Avyam. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non doer, being unchangeable. Bhagavad Gita 4.13. Hare Krishna. Hare Krishna. One must not only have the qualities of a Brahmana, but one should also work as a Brahmana, for one's qualities are tested by his work. If one is a qualified engineer but simply sits down at home and does not work, what is his value? Similarly, unless one works as a Brahmana, there is no value to his simply saying I am a Brahmana. One must therefore work as a Brahmana by fully engaging in the service of Param Brahmana, Krishna, the Supreme Brahmana. How can service to the absolute truth be executed? Yamana Niyamana Cha. The practice of yoga or linking with the Supreme is based on the principles of regulation and control. Regulation cannot be executed without control. Therefore, one must be thoughtful and purify himself. If one wants to pass an examination, he has to go to school.
follow the principles of the school, and take some pains in his study, and then gradually he comes to be successful. If he plays all day on the street, how can he expect success? Therefore, in the process of being explained by Sukadeva Goswami, the first necessity is tapasya, austerity. Even if austerity and brahmacharya are painful because we want to be unrestricted, as soon as we are regulated, what appeared to be painful is in practice not painful. There are two classes of men: those who were sober, called dhira, and those who were extravagant, adhira, called adhira. When one is in spite of provocation or in spite of presence of sources of material agitation, can remain steady in his position, called dhira. Example of dhira is given by Kalidas Pandit, a great Sanskrit poet who wrote a book called Kumar Sambhavam, where he is given the example of where he is given an example concerning Lord Shiva. It appears that when the demigods were fighting the demons and and were were being defeated, they decided that they could be saved by the commander-in-chief born from the semen of Lord Shiva. Lord Shiva, however, was in a meditation and acquired the needed semen was very difficult. They therefore sent Parvati, a young girl who appeared before Lord Shiva and worshipped his genitals. Although this young girl said before Lord Shiva and touched his genitals, Lord Shiva was steady in meditation. Kalidas says, here is an example of Dhira. For despite a young girl touching his genitals, he was undisturbed. Hare Krishna. Similarly, someone sent a young prostitute to disturb Haridas Thakur, and upon hearing her appeals for intercourse, Haridas Thakur said, "Yes, your proposal is very nice. Please sit down and let me finish my chanting, and then we shall enjoy." Morning came, and the prostitute became impatient, but Haridas Thakur replied, "I am very sorry, I could not finish my chanting. Come tonight again." The prostitute came for 3 nights, and on the third night she fell down at his feet, confessed her intentions, and pleaded with him. "I was induced to perform this act by a man who is your enemy. Kindly excuse me." Haridas Thakur then replied, "I know all about that, but I allowed you to come here for 3 days so that you could be converted and become a devotee. Now take these chanting beads and go on chanting. I'm leaving this place." Here is another example of a Dhira who has control of his body. They words work and work होगा प्रभु जी Vaku. Vak. वाक and intelligence buddhi. One's body, words, and intelligence should be controlled by one who is dhira and who actually knows the principles of religion. Hare Krishna. We have been continuously committing sinful. Okay. Sorry to interrupt you. Swati Mataji is also here. So, Oh, okay. Yes, okay, go ahead. Hare Krishna. We have been continuously committing sinful activities since time immemorial, and we do not know when this began. But this life is meant for rectification of all the mistakes that we have committed. If one sets fire to unwanted grass and creepers in a field, they will all be burned. Similarly, by the process of austerity and penance, one can liquidate all sinful activities and become purified. But Shukdev Goswami suggests an alternate process. Kechit kevalyu bhaktya vasudeva parayana agham dhunvanti kartsneya kartsneyana niharam eva bhaskaraha. Generally, if one leads an austere and pious life of celibacy, equanimity, charity, etc., people will say that he is a very pious man. But simply by becoming Krishna conscious, one can kill all the resultant actions of his past sinful life. A fog disappears as soon as the sun rises, and Krishna rises with the brilliance of thousands of suns. Hare Krishna. This process is accepted only by someone who is very fortunate. Chaitanya Mahaprabhu therefore said, Brahmananda Brahmite Kon Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasad Paye Bhakti Lata Beach. By the grace of Krishna and the spiritual master,
A fortunate person, after wandering throughout the universe in different species of life, receives the seed of pure devotional service. Krishna consciousness is meant for the very fortunate, for simply by accepting this one process a person can surpass all the duties of austerity, renunciation, celibacy, etc. Sukadeva Goswami declares, Kechit Kevalya Bhaktiya. One who is extremely fortunate takes to the process of pure devotional service. Kevalya Bhakti refers to pure, unalloyed devotional service in which there is no desire but to please Krishna. One should not render devotional service just to increase his income. We want money to become happy, but if we take to Krishna consciousness, automatically we will become so happy that we will neglect money. Money will automatically come. Happiness will come. Yes, Yes, Guruji. It was Dhruv Maharaj who lamented, how foolish I was that I took to devotional service with a desire for material profit. Ordinarily, for material profit, one goes to his boss or some rich man or demigod, but a devotee does not go anywhere but to Krishna, even if he has material desires. If one goes to Krishna, even for material advantages, the day will come when he forgets material desire, just like Dhruv Maharaj. He was repentant and said, I came to. Okay. Hare Krishna. आई गेस आलोक प्रभु जी बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही, आपको आ रही है उदित प्रभु? नहीं प्रभु जी। अब आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी इसकी अभी आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है प्रभु जी। यस। अच्छा, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मैं यहाँ तक सुना उदित प्रभु आपका, I came to Krishna. He was repentant and said, I came to Krishna. Okay, brother. I came to Krishna and asked for something material, just like one who has pleased a very rich man and who asked him for a few grains of rice. If a rich man agrees to give us whatever we want, but we ask him only for a few grains of rice, is that very intelligent? Asking Krishna for material benefit is exactly like this. One need not ask Krishna extraneously for material happiness, for material happiness will come automatically, roll before his very feet, pleading, please take me, please take me. Yes, Prabhuji. ये तो मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो काफी भक्तों को भी रियलाइजेशन है वो जो सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं सीरियसली, तो फिर मटेरियल प्लेजर तो ऑटोमेटिक आ ही रहे हैं उनके पास. Okay, so we'll stop here. We can discuss any question or comment. Swati, how is your health now? अभी ठीक है सब? Not very good. Oh, नहीं है अच्छा. अभी. Okay. करता हूँ बात. So the through कैसा लगा आपको? Yes, Prabhuji. Prabhuji, I have few doubts. अभी chapter 4 में Prabhupada one should take what God allotted to him. तो इससे मतलब काउंटर कर सकते हैं कि जब मतलब अभी जब पूरा पैराग्राफ पढ़ा हमने कि अगर हम ग्रास खा रहे हैं तो that is also living, we are also मतलब that is also vegetarian thing, तो हम एनिमल्स भी तो खा सकते हैं फिर, और हम कैसे डिसाइड करेंगे गॉड ने हमारे लिए क्या अलॉट करा है? तो वो तो भगवान बताए हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो श्लोक भी तो प्रभुपाद ने मेंशन कर दिए. प्रभुपाद कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो प्लांट्स खा सकते हैं हम लोग, है ना, लीव्स खा सकते हैं, और तोयम वो सब हम खा सकते हैं. और मतलब वो हम क्या खा सकते हैं, वो भगवान बोले मैं खा सकता हूँ, क्योंकि वो भगवान खा सकते हैं तो इसलिए हम वो खा सकते हैं. अगर भगवान बोले कि भाई मैं ये शेर खा सकता हूँ, नॉनवेज खा सकता हूँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, काटो मारो, भगवान को ऊपर करो, खा लो. अच्छा, उसका भी फिर प्रभुपाद बताया आज जो हम पढ़े कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई ये खाता भी है, मान लीजिए कोई है जो व्यक्ति खाता है, तो डेमीगॉड को ऑफर करके और फिर खा सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे खाना अलाउ कर दिया है, इसका मतलब है कि रेगुलेटेड वे में पहले वो आए, पहले वो रेगुलेटेड वे में आएगा, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा. स्क्रिप्चर्स में सब कुछ है. यस प्रभु जी. और प्रभु जी
अभी चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे थे कि भोगी भी नहीं होना चाहिए और त्यागी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों ही गलत बात है। दोनों गलत बात है, क्योंकि जो हमारा है ही नहीं तो ना हम भोग सकते हैं ना त्याग सकते हैं। और मैं वो सब भगवान की मतलब वी शुड एंगेज देम इन अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा और फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। उसमें प्रभुपाद बताया ईशोपनिषद का मंत्र 1 ईशो वस्य इदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, तो उसमें बताया कि भाई सब तो भगवान का है। तो अगर कोई कहे कि मैं भोग रहा हूँ तो वो भी चोर हो गया। बोले भगवान का है तो तुम कैसे भोग रहे हो फिर? और कोई बोले रेनंसिएशन मैंने त्याग दिया, बोले तुमने क्या त्याग दिया, तुम्हारा भाई नहीं पहले, तो दोनों ही बात गलत हो गई। इसलिए प्रभुपाद बोले कि जो भी है क्योंकि वो भगवान का है उन्हीं की सर्विस में लगाना इंटेलिजेंट काम। यस जी, तो फिर कोई क्वेश्चन ये कर सकता है यस जी कि तो फिर हम आए क्यों हैं इस संसार में? हाँ, तो हम संसार में इसीलिए आए क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते थे सेपरेटली। ये बात भी प्रभुपाद बताए ना, प्रभुपाद बुक्स में हम डिस्कस किए थे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में भी, कि वी वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा, सो वी केम टू दिस वर्ल्ड। सो इसीलिए वो जो जिनकी भोगा मेंटेलिटी होगी ना, तो वो क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आया क्यों भाई? जैसे किसी से पूछो कि भाई तुम मुसाफिर की तरह हो, तो अब एक मुसाफिर को पता होता है ना कहाँ पे आ रहा हूँ, क्या घूमना है, उसकी इटिनरी पूरी रेडी रहती है कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे। लोगों से पूछो भाई तुम क्यों आए, उन्हें पता नहीं उनकी क्या इटिनरी है, क्यों आए यहाँ पे, पर्पस क्या है, उनको पता ही नहीं, तो वो क्या कहते हैं एंजॉय करना है हम तो वहां पे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो भोग करने की दृष्टि से आया तो वो भी गलत हो गया। फिर कोई त्यागी मिल जाए वो भी गलत हो गया। तो अगर बोले क्यों आए हैं, तो हम इसीलिए आए हैं क्योंकि वी वांट टू रिवाइव अवर ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस बैक, which means we want to utilize all the resources in this world in the service of Krishna. Intelligence, body, जैसे प्रभुपाद ने हैंड का एग्जांपल दिया, बोले हैंड भी तुम्हारा थोड़ी है। कल को भगवान अगर सैंक्शन करना बंद कर दें कि ऐसे हाथ उठाना मैं सैंक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो पड़ा रहेगा ऐसे नीचे। So we came to this world to revive our original Krishna consciousness. They will ask, is this the only way? Why only Krishna consciousness? भाई और भी है। हाँ, तो वो भी भगवत गीता में भगवान बता ही रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वही एक तरीका है भगवान को वापस प्राप्त करने का। और कोई डेमिगॉड ये सब बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, और कर ही नहीं रहे भगवान बात, तो फिर हम क्यों फॉलो करेंगे? Yes, भगवान बात करते तो हम कहते कि चलो ठीक है, फिर हम भी शिवा को, शनिदेव को ऐसे पूजना शुरू करेंगे। भगवान नहीं बोल रहे तो फिर हम भी नहीं बोल रहे हैं। Okay. So as per scriptures we are saying. Obviously वही मैं बोला कि मतलब जैसे अब हम स्टार्टिंग जब पिछला बुक हम पढ़े थे तो उसमें आ रहा था कि जो भी आपकी डिजायर होती है वो भगवान दे देते हैं। If you want to get cheated, then you will get all the supplies to get cheated. तो कोई ये बोल सकता है ना कि आप भी तो फिर चीटिंग ही हो रही है ना आपकी। आप भी कई बार लोग बोलते भी तो हैं क्या रिस्पॉन्स है, बोले हाँ अरे आप भी फंस गए स्कॉन में, means you also got cheated, है ना। तो हमारे पास स्क्रिप्चर्स का एक रेफरेंस है कि भाई नहीं, हमारे पास एटलीस्ट स्क्रिप्चर्स है ना प्रूव करने के लिए, नो वी आर नॉट चीटेड। अब स्क्रिप्चर्स में फेथ आना वो एक बात है, कोई बोले कि नहीं मेरे तो स्क्रिप्चर्स में ये तो आदमी नहीं लिखा है, मैं कैसे मान लूं। तो संसार में हम देखते हैं कि अगर आपको एक चीज में आगे बढ़ना है तो आपको वो एक्सोमेट्रिक ट्रूथ पे बिलीव तो करना ही पड़ेगा। मैथ भी सीखनी है तो आपको मानना पड़ेगा कि जो पॉइंट है ना उसकी लेंथ है ना हाइट है ना विड्थ है, तो वो आपको मानना ही पड़ेगा, दैट इज एक्सोमेट्रिक ट्रूथ। वैसे ही वेदास अपना जितने भी स्क्रिप्चर्स है वो सभी एक्सोमेट्रिक ट्रूथ है, आप नहीं मानेंगे तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। करेक्ट ना? Yes, Prabhuji. And also they are constant and timeless as well, scriptures. हाँ. Yes, Prabhuji. Yes, thank you, Prabhuji. Okay, yes, you should go. No, just Prabhuji, I just want to add about two things that Prabhu asked about that कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए sufficient है कि नहीं है। तो इस पे राजसमृत स्वामी है ना, उनका मैं लेक्चर सुन रहा था, तो one of the devotee asked in the lecture, between the lecture that प्रभु जी हमें इसके बारे में पता कैसे चलेगा। तो उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि इफ यू आर सफिशिएंटली मतलब फुलफिल्ड बाय द व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, कि जितना आप कर रहे हो उससे आप खुश हो, तो बस समझ जाना कि उतना सफिशिएंट होगा। मतलब यू कैन नॉट आंसर दिस, कि ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है, बट ये खुद का एक इनर सेटिस्फैक्शन होता है। अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं, ऐसे तो इंसान नहीं होगा कभी भी सेटिस्फाई, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं जिससे आपकी सारी सुविधाएं पूर्ण हो पा रही है, मतलब सारी चीजें हो पा रही हैं, आप अपनी सेहत सही रख पा रहे हैं, आपको खाने के लिए मिल रहा है और अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं और आप दान पुण्य कर रहे हैं, तो आप मतलब इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको सफिशिएंटली मिल चुका है, आप इसको पाने की आपको आगे जरूरत नहीं है।
तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि इसे हम जितना ज्यादा खींचेंगे ये उतना ज्यादा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इससे जितना लाइट रखेंगे हम उतना ज्यादा रह सकता है। और प्रभुपाद में एक थीम चली आई, जैसे थर्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे थर्ड चैप्टर में प्रभुपाद ने बताया कि पश्चाताप कैसे करना है। फोर्थ चैप्टर में प्रभुपाद बताते हैं कि तपस्या आप पश्चाताप नहीं कर सकते क्योंकि आपका टेन्योर बहुत छोटा है लाइफ का। आप 100 साल जिएंगे, अगर आप पश्चाताप करते रहेंगे इसमें फंस जाएंगे, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद ने शॉर्टकट मेथड बताया कि प्रभुपाद ने वेदास से बताया, अपने मन से नहीं बताया, वेदास से बताया कि यू स्टार्ट डूइंग तपस्या। आप तपस्या करेंगे तो आपको पश्चाताप नहीं करने पड़ेंगे, और साथ में तपस्या के साथ में आपको कंडीशन ये है कि भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो वो तपस्या में आप बार बार इंक्लाइन होंगे भोग के लिए। तो फिर प्रभुपाद आते हैं कि तपस्या करने के बाद इसमें कैसे होगा, मतलब आप स्टडी कैसे होंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो उसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, एनालॉजी बहुत अच्छी लगी मुझे प्रभुपाद की, कि आप जैसे पिताजी को, मतलब आपको 100 रुपए की वैल्यू नहीं पता होती, तो जैसे आपको अपनी गुड वर्च्यूज की वैल्यूज नहीं पता होती है, तो आप वो भगवान को दे देते हैं कि आप देख लीजिए इसे कहाँ लगाने मेरे हित के लिए। तो वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि आपको नहीं पता कि आप अच्छे काम का आपका रिजल्ट मतलब कैसे भोग नहीं कहूंगा मैं, इसमें कैसे यूटिलाइज करना है इन प्रॉपर वे। तो जैसे पैसा हुआ और कुछ भी हुआ, कोई भी गुड वर्च्यूज हुए आपकी लाइफ से, तो आप भगवान को अर्पित कर देते हैं वो सारी चीजें कि वो आप देख लीजिए ऐसे कैसे इस्तेमाल करना है, मेरे लिए करना भी है कि नहीं करना है, या इसका इस्तेमाल मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आई फाउंड कि इसका इलाज भी दे दिया प्रभुपाद ने, कि आपको भोग और त्याग बताया प्रभुपाद ने, और भोग और त्याग से निकलने का इलाज भी बता दिया है कि दिस इज हाउ यू डू इट। एंड या दिस आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ टू एक्चुअली, ये प्रैक्टिकल टिप्स है प्रभुपाद की, कि लोग तो बता देते हैं, ज्ञान दे देते हैं सब लोग, लेकिन ज्ञान को अप्लाई करने का मेथड प्रभुपाद ही दे पा रहे हैं प्रैक्टिकल वे में, कि दिस इज द वे, दिस इज हाउ यू स्टार्ट। या दिस इज ऑल वी हैव टू ऐड। थैंक यू शुभ। करेक्ट माता जी, I want to say कि like हमें मनी तो चाहिए ना for like basic necessities, फिर हम उसे भोग कर रहे हैं तो उसका प्राप्त तो आएगा ना फिर। हाँ आएगा तो सही। कृष्णा की सर्विस में नहीं लग रही, मतलब मिनिमम जितना हम उसका एक रूप गोस्वामी नियम बताए हैं, और फिर थोड़ा उस नियम को बाद में प्रभुपाद और लाइट कर दिए थे। तो उसमें ये था कि 50% इनकम जो हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, 25% फ्यूचर के लिए रख लेनी चाहिए, और 25% में अपना गुजारा करना चाहिए। हाँ उस टाइप का कुछ नहीं है। बाद में प्रभुपाद ने इसको थोड़ा लाइट कर दिया था कि ठीक है 10% आप भगवान की सेवा में लगाइए, उस तरह से उसमें और बाकी नंबर्स भी हैं। अभी हमारे स्तर पे तो अच्छा ये रहता है कि जो जिनके भी हम टच में हैं, एक तो होता है भक्त किसी के टच में ही नहीं है, अपनी मर्जी से यूट्यूब पे जाके कुछ भी सुन रहा है, लेवल के लेक्चर नहीं है बट वो हाई फाई लेक्चर सुन रहा है। तो वो सबसे क्या है ना, वो डिस्टॉर्टेड कॉन्शियसनेस हो जाती है एक्चुअली, उसे लगता है वो हाईली एलिवेटेड भक्त। तो हमारे स्तर पे तो यह है कि हम, इनफैक्ट मैंने देखा है कि ऊपर के स्तर पे भी जो 10-20 साल प्रैक्टिशनर हैं भक्ति में, वो सब भी अपने सीनियर के टच में रहते हैं, तो वो उनको प्रॉपरली गाइड करते रहते हैं कि ऐसे जो इनकम आ रहा है इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ। तो हमारे स्तर पे तो अभी वही जरूरी है। फिर एक बार मुक्त हो गए, तीनों गुणों के ऊपर पहुंच गए, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कमाने में वैसे कुछ टाइप लोग बोलते कमाने में प्रॉब्लम नहीं है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो बोट भर के जो सोना था, जब छोड़ के जा रहे थे उसको, तो बोट भर के सोना था जो बांट के गए थे वो, उसमें दिक्कत नहीं। अभी हमारे स्तर पे तो हम इतना ना सोचे कि ठीक है हम भोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्रिंसिपल ना पता होना चाहिए, बट ये है कि जो काउंसलर फैसिलिटेटर है उनके टच में रहे, उनसे पूछते रहे हाँ भैया आप क्या करना है, इतना आने लगा, इसका कैसे स्पेंड कैसे करना है, ये सब, and they will guide you properly. Okay, Right, thank you. Thank you. Yes, Swati. एक क्वेश्चन था कि मतलब चैंटिंग भी करते हैं और 16 राउंड भी करते हैं, बट स्टिल भगवान से, ठीक है वो मटेरियल डिजायर होती है, बट वो मांगते भी नहीं है भगवान से वैसा कुछ, बट स्टिल वो अंदर से रहती है कहीं ना कहीं। तो उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए? मेरा अनुभव तो यही है कि चैंटिंग से, मतलब मुझे नहीं पता स्क्रिप्चर में क्या इसका रेफरेंस है और मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, बट मेरा जो रियलाइजेशन है वो ये है कि जब हम माला करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही चली जाती है। एक टाइम तो लगता है डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिजायर इज, और
अगर हम फैसिलिटेशन में रहते हैं तो क्या रहता है कि उसको समझ में आता है कि इसका इतना स्ट्रांग है इस चीज को लेके, तो उसको कैसे कृष्णा की सर्विस में लगाना है। जैसे जैसे कुछ साल पहले मेरे को ये था कि नहीं मुझे यूएस जाना ही है शादी के बाद, तो मेरे अंदर था ये डिजायर कि नहीं मुझे जाना ही है, तो माला वगैरह वो सब चल रहा था। तो जब मैं फैसिलिटेशन तो मुझसे बोला गया, पहले तो उनका ये था कि नहीं जाने की तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको, आप इधर रहिए, प्रीचिंग में जरूरत है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये है कि मैं थोड़ा ये कर लूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए पर मंदिर के पास रहिएगा। तो फिर मेरा जाना भी हो गया और मंदिर के पास भी रहा, और उससे मुझे बाकी और बेनिफिट्स भी मिले, वहाँ पे एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग मिला जो यहाँ नहीं मिल पा रहा था उस टाइम से। तो की इज कि जब हम बोलते हैं कि जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, जैसे आज प्रभुपाद बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तो उस दास वाले मूड में रहें और किसी फैसिलिटेशन में रहेंगे तो दे हैव योर कनेक्शन, दे हैव कनेक्शन विद यू, तो वो जानते हैं आपकी नेचर क्या है। तो जो छोटे छोटे डिजायर है स्मॉल स्मॉल वो वैसे ही खत्म हो जाती हैं एसोसिएशन से, चैंटिंग से। जो स्ट्रांग है तो वो फैसिलिटेशन काउंसलर की जो इंटेलिजेंस है वो यूज करते हैं और उसके माध्यम से वो उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं कृष्णा की सर्विस में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी के अंदर से कई बार फिर वो गिल्ट आता है कि हम मतलब कैसे चैंटिंग वही कर तो रहे मैं हैं। कह रहा हूँ, गिल्ट आना ही नहीं चाहिए। अरे तुलसी महारानी जो थी वो भगवान विष्णु को पाना चाहती थी, और नारद मुनि उनको बोले तुम्हें विष्णु चाहिए, बोले हाँ हाँ मुझे विष्णु चाहिए, आप इस राक्षस से शादी कर लो आपका विष्णु मिल जाएंगे। तो उनको गिल्ट आ जाना चाहिए, अरे 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 मुझे राक्षस से शादी करने को दिया। उनको विष्णु मिले नहीं मिले, उनको विष्णु मिले, समझ रहे? तो गिल्ट आपको क्यों आ रहा है? आप तो फैसिलिटेशन में हो, जो बोल रहे हैं आप कर रहे, खत्म बात, गेम खत्म हो गया, तो क्या करना है? कल को गुरु भी तो बोल सकते हैं आपको जस्ट चेक करने के लिए, कुछ नहीं, करेक्ट ना? तो मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि बहुत ब्लाइंडली हम चले, पर फिर भी हमें मानना चाहिए कि नहीं ठीक है, इधर से डायरेक्शन आ रहे हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, दैट्स ऑल। अब गिल्ट किस काम का? ओके स्टार्टिंग में रहेगा वैसे, ऐसा नहीं है, जैसे मैं भी यूएस चला गया था, थोड़ा गिल्ट रहता है कि पता नहीं यार वो थोड़ा स्टार्टिंग मना कर रहे थे, बाद में बोल दिए कि चला तो, बट वहां जाके रियलाइज हुआ कि नहीं गिल्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब एडवांसमेंट हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट ना? यस कृष्ण जैसे आप रास्ता में है और मतलब फैसिलिटेटर से भी रहते हैं टच में, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि जो हाँ हमारा टेंशन है उसमें कम टाइम है और जो बाहर का मेटेरियलिस्टिक चीज है उसमें ज्यादा टाइम डिपोट करते हैं, तो वो चीज एक हावी होती है। तो अब उससे मतलब ये तो आपने आंसर कर दिया ना इसका, कि टाइम ज्यादा हमें स्पिरिचुअल लाइफ में लगाना है। टाइम जितना मटेरियल में लगेंगे, मैं अभी कुछ दिन पहले किसी भक्त से डिस्कस कर रहा था, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर कम श्रद्धा वाले से एसोसिएट करते हैं तो श्रद्धा कम हो जाती है, ज्यादा वाले से करेंगे तो श्रद्धा बढ़ जाती है। तो बस वो टाइम वाला फैक्टर है कि टाइम ज्यादा कहाँ लगता है। कई बार जब मैं अटलांटा टेम्पल में रहता था तो वहाँ पे लेटर्स आते थे कैदियों के, तो उसमें एक कैदी ने लिखा था कि मैं यहाँ पे कैसे एसोसिएट करूंगा, यहाँ तो बाहर से फोन में बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग उसको रिप्लाई करके यही बोले थे कि ये रही प्रभुपाद की बुक्स, क्या भागवतम का फर्स्ट कैंटो भेजे पहले, बोले इनको कंप्लीट कीजिए, आप नोट्स बनाइए, फिर हम दूसरा ही भेजेंगे, एंड यू टेक एसोसिएशन ऑफ दीज बुक्स, है ना? वैसा कुछ भक्त हम देखो यहाँ करते हैं, वो क्या करते हैं कि परमानेंट हेडफोन रखते हैं अपने कान में, वायरलेस वाला, और लेक्चर सुनते रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो भी, इधर उधर काम कर रहे हैं तो भी, दे ऑलवेज हैव दिस एसोसिएशन। पढ़ नहीं सकते बट ठीक है हियरिंग तो कर सकते हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, घूम रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सब हियरिंग चल रहा है। बट दैट आल्सो इन प्रॉपर गाइडेंस कि कौन सा लेक्चर अब मैं सुनूं, कौन सा रीडिंग करो, ये करो। यूट्यूब पे जाके हीरो बनना बड़ा गड़बड़ है। बोले बड़े बड़े स्पीकर के लेक्चर सुन रहा हूँ तो तुम बड़े थोड़ी ना हो गए अभी, अपना सिस्टमेटिक प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, नर्सरी का बच्चा 10th का पढ़ाई थोड़ा ना करेगा। फर्स्ट फिलोसफी में बहुत ज्यादा ना मतलब कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम कुछ डिफरेंट लेक्चर सुनने लगते हैं। वो तो है ही, तभी तो गड़बड़ है, इसलिए सिस्टमेटिक करना चाहिए। कई बार कुछ लोग डायरेक्टली भक्ति शास्त्री करते हैं, ऐसा नहीं, पहले आप पूछ लीजिए जिनके अंडर में भक्ति कर रहे हैं उनसे। भक्ति शास्त्री का एक लेवल है, इसलिए पहले स्मॉल बुक्स कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, फिर धीरे धीरे भगवद गीता और वो सब, करेक्ट? ये सब है। ओके सो विल स्टॉप हियर। अभी ये हमारा जूम का सेशन उदितपुर ने ऐसा निकाल दिया है कि ये अनलिमिटेड हो गया है। तो अभी हम डिस्कशन कर पाएंगे लास्ट में।